Hello and welcome to this very special episode of the News Hour. Anupam Kher ji, I'm meeting you here, but today you are an actor, an author, a filmmaker, a producer, director, and above all, my favorite human being. Anupam Kher ji, welcome to this new avatar, and joining us is also Shubhangi Datta, making her debut under some very expert guidance from Anupam Kher ji. Anupam Kher ji, फिल्में तो बहुत की होंगी आपने, लेकिन Tanvi the Great, from the trailer that I've seen, from the standing ovation at NDA that I've heard about, and your tweet itself, why is this film so emotionally connected to you? Am I right? Yes, Is it it is for various reasons, Navika. First of all, thank you for that amazing introduction. You always almost bring tears in my eyes. Come on, you. कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. Water never helps. Navika helps. So, I feel that as you grow in age, you discover what do you want in life. What do you want to spread? I'm not saying that leave your legacy behind. I don't believe in all that. I think a lot of people before me have come and gone and things like that. I believe in goodness. I believe in spreading happiness. I believe in spreading, when I say, my father used to say the easiest thing in the world is to make somebody happy. So for 23 years I did not make any film because I didn't get any story. And what did I want to convey in a story? I wanted to convey in a story that our belief in goodness should never go. And strangely, that belief has come from an autistic girl, my niece. Her name is Tanvi, on whose the name is based on. So we were in Delhi 4 years back, celebrating my brother Raju's daughter Vinda's wedding, and we were in a farmhouse. तो सब लोग नाच रहे थे, पी रहे थे, डांस कर रहे थे, और तन्वी ये 13 साल की थी तब, और ये साइड में खड़ी थी और पेड़ ऐसे देख रही थी, पहाड़ को देख रही थी. तो मैंने कहा, शी इज ऑटिस्टिक. मैंने कहा, तन्वी, व्हाट आर यू लुकिंग एट? शी सेड, आई एम लुकिंग एट माय वर्ल्ड. दैट आंसर वाज सो unbelievably full, and yet I do not know what is she wanting to say, because I did not discover what her world, and she could not explain. And then I discovered also, because I had seen her growing up, I discovered that she is an epitome of straightforwardness, funny, goodness, and no manipulation. So that answer, I wanted to discover her world. So we weaved a story along with my writers Abhishek and Ankur, and we came up with the story that Tanvi, what if Tanvi goes to spend some time with her grandfather, who is an ex-army officer, and sees the atmosphere of the army cantonment in Lansdowne? What if she discovered that she wants to join army? And Indian army does not take autistic people. So it's an inspirational story where, because we are all talking about 500 crores, 1000 crores. But if I ask you, Navika, which are your 5 favorite films, you will not talk about the films which have made money. You talk about the film which had touched your heart. So this is a film which is from my heart to the world's heart, a film from India for the world. I completely agree with you, because Bollywood probably is going through a phase, and I'm a Bollywood buff. Yes. मुझे even make believe हिंदी फिल्मों की stories with happy endings बहुत अच्छी लगती है. Correct. मैं उसमें बहुत ज़्यादा meaning नहीं ढूंढती. Correct. Even if there are dances and it's a good family emotion and stuff, it works for me. But these days, yes, you do see films which are a set of taut productions made on graphics and AI. Somewhere the human emotion is lost, is the sense I come away with. You're absolutely right. Unfortunately, I would like to call it Hindi cinema, this Bollywood is, but anyway, now Hindi cinema has become Bollywood, unfortunately. I fought for it. Most of us, बच्चन साहब हमेशा कहते हैं, अरे क्या होता है बॉलीवुड. बट बॉलीवुड हम इतने
बेवकूफ़ हैं कि आपका वर्ल्ड का कोई भी जो सिनेमा है उसने अपने वर्ल्ड को, अपने सिनेमा को चाइना वुड नहीं बनाया, पोलिश वुड नहीं बनाया, फ्रेंच वुड नहीं बनाया। हम एक्सेप्ट बड़े खुश हो गए कि हमारे को हॉलीवुड कल बॉलीवुड कहा जाता है। एंड आई थिंक in order to become cool, we have lost the innocence of cinema that we had, which used to touch people's heart. We are trying to be cool with the language, we are trying to be cool with the guns, and we are trying to be third copy of Quentin Tarantino. And I'm part of those films. हाँ, ऐसा नहीं है। going to ask हाँ, ऐसा नहीं है। बहुत सी फिल्मों में आप भी नजर But आते हैं। that's what being evolved is all about. क्या आप वो भी कर सकते हैं? और हाँ, वो भी कर, मुझे बहुत मजा आया राम लखन करके, और वो 90s का सिनेमा तो कमाल था, आपके दिल को छूता था। अब थोड़ा सा हम डावाडोल हो गए हैं। और आपने एआई की बात की, आई वाज टॉकिंग टू मिस्टर महेश भट्ट, आई सेड भट्ट साहब, एआई विल रिप्लेस everything, but AI cannot replace heart and soul. And this film has heart and soul both. That's why when you give me an introduction and I tear up and embarrass myself, and she says, do you want a glass of water or something like that, it's because that's what I want to, that's what I believe in. Tanvi is a girl who can teach us, and she's naughty and she's funny and she's great. She comes into the life of this Boman Irani, Jackie Shroff, Arvind Swamy and me, who 4 people who are at the brink of their life where they're a little sad that things did not happen to way that things should have happened. And she walks into their life like, for any lack of any other expression, like a breath of fresh air. And from her point of view, she changes their life. And it's a musical, because our Tanvi sings, and music is by Mr. M.M. Keeravani. And we have 2 Oscar winners. आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। Shubhangi, Anupam Kher as your first teacher, and to do the title role of Tanvi under his direction, because I don't know, इनकी पहली directed film Om Jai Jagdish, I have mixed views about it. So I don't know how great a director he will turn out to be in this one, and I'm being realistic, I say it as it I'm is. tempted to say Romani, but I'm keeping quiet. हाँ, बोल देना, and say it on camera, I have no I will. problems. आपसे मैं सुन लेती हूँ. But what has that experience been all about? Because as I said, he's got so many facets now, writer, script writer and everything, and then above all, he's a great human being. Is he also a great human being as a director? Was he exacting? How was the entire... Ma'am, when you gave his introduction about a wonderful author, actor, director, but then you said, but above all, a great human being, I think that's what I have been saying in all my interviews, because I myself tell sir all the time, sir, I have always looked up to you as a great actor, because I've seen your movies, I've seen you in every Bollywood movie possible. I've seen you direct now, and I was lucky enough to be directed by none other than him. And you are a greater director, but above all, I feel like you're an amazing and the greatest human being. I think because he is so warm, welcoming, and the way he just teaches wisdom. He puts his own life experience, he puts his own wisdom into everything, like everything that has happened in this movie or with everybody in our lives. I think it has all been possible because of his and the way he sees and experiences life. So I think he's an amazing teacher. He has evolved, like all of us have evolved for the better in so many ways, because this movie has taught me not just about acting, not just about camera, but so much about life. So much about the good things and the positives that we need to see in life. Oh, well, master craftsman yeah. that he is. Saransh jiski first film ho, uske baad, I've been very harsh to you. I should just zip it. जिसकी सारांश फर्स्ट फिल्म हो, उसे सिर्फ आदमी सैल्यूट कर सकता है. बट अनुपम जी, what was this experience like 23 years later? I think it was the most cleansing thing that we have done for the soul. And not only me, 240 people who were involved in the shooting. You don't know the story. So we had, it's a huge, but big budget film. It's a 50 crore budget film. I wanted to make an epic.
because I did not see the story of Tanvi as a small story. You see, when you have army as the background, and it's Indian Army, I have to have the canvas. And Army has been amazingly supportive of this film. When the Army's tribunal saw the film 10 days back and they said, no change, that was the biggest certificate that I got. When NDA 2,500 cadets who are going to be our officers of the next generation, girls included, when they stood up and applauded for almost 8 minutes, उससे बड़ा मुझे कुछ इनाम नहीं मिल सकता. So I thought that it's what was the question? Experience कैसे था? So I wanted to, so I will be releasing strangely a lecture that I gave on the first day of the shooting in Mumbai. That was our first day. So I just thought I must tell people, because अलग-अलग फिल्मों से लोग आते हैं, अलग-अलग वाइब्रेशन लेकर आते हैं, अलग-अलग एनर्जी लेकर आते हैं. तो मैंने कहा this film is about a girl who is a beautiful heart girl. We will want to make this film with all 240 of us. We'll never scream, we'll never shout, not at each other, not on the set, because we are dealing with a girl who is supposed to be this pure soul. So none of her, for 62 days we shot for the film, nobody shouted. And everybody's life changed. You didn't lose your temper with it? No, never. I used to get frustrated because so 50 crore budget, 25 crore rupees was promised to me by a person, a shipping tycoon, and 1 month before the film was to start, he said, please postpone it, I will not be able to arrange money. तो I said, बोलेगा कि 1 महीने बाद कर दो. तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अभी कुछ indefinitely. Then I told my CEO, I said, क्या करें? He said, we can't make the film, we don't have the money. I said, if ये film आज नहीं बनी तो कभी नहीं बनेगी. Then I wrote to some friends of mine who are doctors, engineers, bankers, etc. उन दोनों ने कभी ने किसी ने 2 crore दिया, किसी ने 2.5. We have 9 co-producers on this film. And that's how, then NFDC came in. Then they gave a certain amount of money. That's how this film has been made. Why I'm insisting on truth. Because truth is very attractive. My grandfather used to say that nothing can replace truth. And I always go back to my theories of my grandfather, of my home and things like that. And The it's an Shimla entertaining Boy. film. The Shimla Boy. The Shimla Boy never goes out of me. And ऐसे लोग जुड़े हैं. We have 2 Oscar winners. We have our DOP is a Japanese lady. उसकी कहानी भी कमाल की है. उसका खुद का बेटा ऑटिस्टिक निकला. पहले वो फिल्म कर नहीं रही थी. Then later on, she went to the doctor and 3 months old child was diagnosed with autism. So she called me up. What is your film about? First she had said no. I said the film is about empowerment of an autistic girl. She said I'm doing your film. I said but story? कहती नहीं I'm doing. Later on she told me this is that day only when I had called her up. We have some amazing people. 4 of my lead actors have not taken a single penny from them because I went to them. I said यार मेरा फाइनेंसर भाग गया बट मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ. उन्होंने कहा हमने मांगे. तो ये गुडनेस कहाँ देखने को मिलती है? I called up Ian Glenn, who is Game of Thrones big star. I had worked with him. I said he changed his dates within 1 month and he landed up and started shooting. कुछ भी हो सकता है. So my theory of कुछ भी हो सकता है can never go wrong, because if that goes wrong, that means I will stop believing in goodness. It's a very रोंगटे खड़े कर देने वाली आपने ये बात बताई है. पर in a materialistic world, in world where people are just looking at bottom lines, what works for them, what is in it for them, ऐसे लोग अभी हैं. नाविका आप मुझे उतने तो नहीं, पर 40 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ और आज 40वें साल में के बाद आपने मेरी इंट्रोडक्शन दी है. एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. आई हैव नॉट लेट दिस इंडस्ट्री, लेट दिस सिस्टम करप्ट मी, बिकॉज दैट इज माई ट्रायम्फ. फिर भी दोस्त हैं? हाँ, दोस्त सब है, सब अच्छे हैं. हमारी इस फिल्म के लिए सबने ट्वीट किया, सबने, शाहरुख से लेकर मिस्टर बच्चन तक, प्रभास, रितेश, आलिया, सबने किया. दोस्त सब है. बट सिस्टम होता है ना, सिस्टम आपको चेंज कर देता है. यू वांट टू बिलोंग टू द सिस्टम बिकॉज यू आर मोर सक्सेसफुल. ये प्रेशर आपके ऊपर कभी नहीं था? किस बात का? कि सिस्टम को बिलोंग करना है. यू हैव डन सम व्हाट 550 और 46. हाँ, 4 ज्यादा बोल दिए मैंने. नहीं हो जाएगी, 2-4 करने पड़ेंगे. हाँ, 2-3. हाँ, नहीं, बिकॉज मुझे लगता है, मैं हमेशा शुभांगी को भी कहता हूँ, मैंने कहा शुभांगी, डोंट लेट द सिस्टम चेंज यू,
because that will be my personal defeat. आपने इस फिल्म में काम किया, you have, and she has really adapted to this girl so brilliantly, and I'm saying it on your show. I don't think any actress, and I have love for all the actresses. I love everybody, and I see great future in them and great potential in them. But the way she has done this role, it is her saransh. It is her Saransh. It is her saransh. That's a big statement. Tanvi. It is. It is. Tanvi And I'm is- saying it not as a director of the film. I'm saying it as a teacher who teaches acting in an acting school. Shubhangi? Yeah. It's टेंशन मत लो. अब इसमें तो हो गया, अब आगे करना है, उसको देखना है. इसमें तो हो गया. इसमें तो इसमें तो मैंने करवा दिया. हाँ, नहीं, इसने खुद किया. She became. We did not tell her. So when we chose her for this film, she did not know that we have chosen her. We did not tell her for 6 months. I do a master class in my acting class for the students. So I do a class where I say rebirth of an actor. So I ask them to shut their eyes and tell me what are your expression going to be if you are in your mother's womb. And then I take a camera and take everybody's close up. When I stopped at her face had no expression, as if she was in that ध्यान में थी. तो मैं बाहर निकला, मैंने फोटो दिखाया हरमन को. मैंने कहा, हरमन ये हमारी तन्वी मिल गई. कहता है एक्सप्रेशन ही नहीं है. मैंने कहा वही तो चाहिए. आई नीड ए कंप्लीट ब्लैंक पेज. Tabula rasa. एंड फॉर 6 months तक हम इसको भेजते रहे ऑडिशन की, ऐसे ऑटिस्टिक लड़की का ये चेंज करो, ये चेंज करो. द बेस्ट थिंग वाज दैट शी वाज टू सेंड अस विद इन 2 hours. हम रात को 11 बजे भेजे. आई ऑल्सो वांटेड टू सॉर्ट ऑफ गेट ए person, actor, who is not only good at her job but who's also disciplined, who is also understands this. After 6 months, we called her to my room and Herman and I told her that you are Tanvi in my. So I don't think isko yakin hua tab. Then after that she went to our Tanvi in Tejpur for 15 days and studied her. So this is not something that you've imagined. You've gone through a whole process. Shubhangi, how difficult was it for you to get into the role of an autistic person? I think the thought of it was more difficult and scary when I used to think of it, that I have to now become this person, and more so I have to do justice to the movie, to Sir's vision and to my dreams as well. And especially like with my first film, because I had no experience before that, but Sir just said that you just need to give in your everything. Whatever is going to be asked to you to do, you have to do that. You have to believe, because I have a particular vision. And he was so passionate about his vision because he knew what he wanted. And I was also at relief because I knew that Sir will handle it. When I started working with the team, I knew that they will have my back, and everybody had my back. So the process of getting into it, when Sir started preparing, because I was also told that in your class, there might be 3-4 other people also. So in my head, I also had this, that I have to send it before them. Because I knew if opportunity is just at your door, you have to pull it in. Because when you just come from not so many opportunities available to you, you have to just go and just like grab the Make the opportunity. most of it. Yes. But was it daunting to be with greats like Jackie Shroff, Bob Nirani, Anupam Kher, Arvind Swamy? I think just the thought of it, but not really around them, not at all. I think this is the most safe and secure place I have felt myself around these people. It was a school in itself. I studied in Actor Prepares, and I've taken master classes from Sir. He's done that, but working with them was a different experience altogether. I think. I saw the trailer, Anupam ji, and का ending ऐसे होता है, मैं किसी को सपना देखने से कैसे रोक सकता हूँ? Correct. So this Tanvi wants to be an army Yeah, officer. and the grandfather knows that first of all, the way she is, we have not shown her, because my niece is also not physically so odd, but we know that उसकी माँ बोलती है कि जूता फीता नहीं बांध सकती है ठीक तरह से, ये चौखट क्रॉस नहीं कर सकती है, कैसे करेगी? बट वो जिद्दी है, उसने सोच लिया है कि मुझे करना है, because also in her mind there is a dream she wants to fulfill of her father.
who And who you are the died. grandfather. I'm the grandfather. My son in the film, Karan Tacker, he dies as a captain in a mine blast. And also the grandfather knows that even if she becomes physically fit, she will not be taken in. She will in the interview, SSB interview, they will find out she's autistic. और वो जाती है अरविंद स्वामी जो इनको ट्रेन करते हैं, अरविंद स्वामी को बोलती है कि मेरे को ट्रेनिंग तो आ गई, फिजिकली तो आपने मुझे बता दिया, मगर एसएसबी के इंटरव्यू में इंटरनेट पे भी नहीं पता चला कि वो क्या पूछते हैं, तो एनी टिप? तो कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी ईमानदारी है, जो तुमसे पूछे उसका ईमानदारी से जवाब दे देना. सो ही इज ग्रैंडफादर दिस थिंग, बट इट्स अ film story about a girl who wants to do something. So it's not only about autistic people, it's us. We give up sometimes. I tell my students in the classroom, the only lesson that I want to teach you, don't ever give up. तो वही वो उसको पूछता कि आपने इसको, आपको तो पता था, आपने रोका क्यों नहीं इसको? तो बोलता मैं किसी को सपना देखने से कैसे रोक सकता हूँ, which is true. अब ये जिस भी बैकग्राउंड से आती है, इनका सपना था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ या मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ. मैं शिमला में 37 रुपये लेकर बॉम्बे आया, मेरे को कोई कैसे रोक सकता था? मैं बॉल्ड था, आधा बॉल्ड हो रहा था, कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था, मैं नहीं रोक सकता. यू जस्ट हैव टू परस्यू गिविंग. आप कितने सालों से लगी हुई हैं करने में? मैं भी कितने सालों से? बिहार की एक छोटी सी जगह है सिंदरी, वहां से आई हो आप, और आज यहाँ बैठे, और क्या डेली एंड डे नाइट, वेदर द सिचुएशन एट योर होम इज bad, good, somebody unwell, you are there at 9 o'clock and doing your show. So that's a great inspiration. We never, people who don't give up, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. We have to put it. And this film has to inspire people. It's entertaining. That's why I'm not selling it. I'm not selling the idea to people. They will watch it. That's why the magic has happened and we are thankful that the trailer has been like that. And I say that even if I get the money that my investors have put in, I am a happy man. To me, the standing ovation at National Defense Academy, Mr. Robert De Niro came to my film. Mr. Robert De Niro, who had come for 10 minutes, stayed till the interval. ये सपनों में होता है. फिर अभी उन्होंने परसों पूरी फिल्म देख ली है. The message that his family has sent me, I share it with you because it's too wonderful, it's something dreams of made of. So सब कुछ अच्छा हुआ है. And कांस में, लंदन में, ह्यूस्टन के एक पेपर ने कहा कि it's a true cinematic masterpiece. अब मुझे उन बातों से डर भी लगता है because I don't want to, and I'm doing I must share with you that I wanted to do the premiere of this film in Mumbai at the Grand Theatre of Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. And I'm doing it. They were very kind enough to sort of say that we believe in your cause. Please do it there. It's a huge place, and I want to do it. So it's not, I have followed the path of the film even in the promotions. हम नहीं कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी हिट हो, क्योंकि इस तरह की फिल्म जब हिट होती है तो आपका अच्छाई में विश्वास बढ़ता है. नॉट ओनली इन ट्रेड, क्राफ्ट में भी, स्टोरी टेलिंग में भी, स्टोरी हर चीज में ना. वरना हम उसी डर्रे पे चले जा रहे हैं, कितना हम अपने आप को चेंज करेंगे. और बहुत अच्छा, पल्लवी सो ब्यूटीफुल इन द फिल्म. नासिर साहब ने एक दिन में बोल दिया कि मैं आता हूँ, मैं करता हूँ. मेरे म्यूजिक डायरेक्टर MM Keeravani sir, he was traveling from some place to some place. He said, tell the road. I told him for 7 minutes and he said, I'm doing your film. There are 9 songs in this film. We made the songs first. For 1 year we worked on the music. No shooting. For 1 year we worked on the script. कितना टाइम लगा? Total? From conception to 3.5 साल. इतना टाइम लोग आजकल स्पेंड करते हैं एक फिल्म बनाने में? मतलब अगर लेबर क्लब नहीं, सियाचिन के बारे में है फिल्म. मैं हमेशा हर शॉट से पहले सोचता था कि जिस सियाचिन के चोटी पर जो जवान खड़ा होता है वो किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का पति है. वो हमको वहां जाना है और उसकी ईमानदारी हमको रखनी है अपने अपने. ऑलवेज हैव रेफरेंस पॉइंट्स. I did Saransh for my grandfather. I did Daddy for my father. I did a lot of films for various pictures. This film in my mind is for all the people who are like Tanvi and
for I have written a book about how this film almost did not get made. It's called Different but No Less. तो आप फिल्म भी बना रहे थे, किताब भी साथ में लिख रहा था क्योंकि वही मुझे शक्ति दे रहा था कि जो गड़बड़ हो रही थी, अच्छा किसी में यूनिट में किसी को नहीं पता था कि हमारे पास पैसे नहीं है, किसी को नहीं पता था, मुझे और हरमन को पता था. तो इट इज डेडिकेटेड टू This book is dedicated to Indian Armed Forces for the courage, sacrifice and unwavering spirit, to the extraordinary souls like Tanvi who remind us that being different is kind of brilliance, and to those who never give up, may your strength continue to light the way for others. तो ये आपको मैं इसकी कॉपी देना चाहता हूँ. I'm honored. या और ये आप मेरे But no less. No, हम different. किसी से कम नहीं. किसी से कम है मगर किसी से कम. ओ, आपने मेरे लिए मैसेज भी लिखा है. बैठ के पढ़िए ताकि कैमरे में भी आ जाए. For Navika, thank you for the reason you are inspirational, compassionate, funny, amazingly knowledgeable and loving. Oh God, इतने सारे एडजेक्टिव्स आपको मैं गन्ने की रस वाली मशीन में डाल दूं तो आप किसी और को ना दो. आपने मुझे कहा है. No, we are very proud of this film, and we are happy that and आपकी लड़की भी मैंने देखो फोटो खिंचाई आज. No, I think you have always been wonderful, and this film belongs to all those people who believe in goodness, and I feel that everybody is good. I genuinely believe that, because मुझे लगता है कि हर इंसान में गुडनेस की पॉसिबिलिटी हम टैप करना भूल गए. तो मैं वो टैप करता हूँ. मैं नहीं कह रहा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ. और इसकी अच्छाई में शुभांगी की अच्छाई में इसके अंदर कहीं वो अच्छाई थी. दैट्स व्हाई शी कुड ब्रिंग आउट द अच्छाई ऑफ तन्वी. दैट्स व्हाई तन्वी इज ग्रेट. That's why you wanted also a new actor, the innocence, and also that it is a tabula rasa. You know. How can start. my path has been that somebody gave me a chance 40 years back, a rank newcomer. तो मेरी स्टोरी से मिलती जुलती ऐसी स्टोरी है. एंड ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी आपको पैसे देते हैं आप किसी वेल नोन एक्ट्रेस को ले लीजिए बिकॉज नई एक्ट्रेस के साथ. बट I want people to believe that whatever Tanvi is doing is happening for the first time. Otherwise, they would have said, so and so actress, brilliant actresses we have, has done the role of an autistic girl very well. Over here, people asked her the day today, are you, kya bola na? Actually autistic. After the screen. After the screen. In Pune. So I think that's the winner. Yeah. If people have to ask you that question. But at no stage did you feel daunted with the sometimes the burden of expectations in itself and the uncertainty. It happens to all of us, whether we are new, whether we are old. Ki will I be able to do justice to this? Will I be able to translate this into the vision that Anupam ji has? Shooting, yes. But I think when we started shooting, because it was back to back, thank God, I was always in that body. I was always in Tanvi's character. So I think I ate like her, I spoke like her, everything throughout my Lansdowne journey, I was in my character. I think that also really helped, and I became that person. I think that's the only reason I could pull it off. If I did. ऐसा नहीं बोलते हैं. There is when you have done well, just say if I did. मेरे रहते मत बोलो. नहीं आपको बड़ी आप तो यहाँ डांट रहे हो और आप कह रहे हो किसी मेरी को. फितरत में है. मैं I'm very तो all this is a sham कि कोई ऊंचा नहीं बोलेगा. ये आपने इफेक्ट के लिए बोला. नहीं यहाँ तो डांट दिया आप. मैं तो इसको बेचारी को हमेशा कल करेक्ट करता हूँ. बेचारी क्यों? इसलिए बताता हूँ. बेचारी डांट खाती रहती है. कल हम खाना खाने भंडारा रोड पे. अच्छा. हाँ. तो आपने खाना खाया? मैं तो उसने रखा तो इसने बोला हाँ ठीक है. मैंने कहा थैंक यू बोलो. वो बेचारा सुबह से लेकर रात तक काम करता है. मैं अब फिर इसके बाद ये आजाद है ना. मेरी पिक्चर जब रिलीज हो जाएगी 18 तारीख के बाद आ जाते, फिर अगली पिक्चर में देखेंगे. तो फिर कम से कम ये तो मत बोलो कि आपने किसी से आवाज ऊंची नहीं की, किसी को डांटा नहीं. मैं डांटता तो बहुत. इसको तो सबसे ज्यादा डांट पड़ी है इसको. बट उसका नतीजा सुनिए अब आप.
हम जिस स्क्रीनिंग में जाते थे तो रेड कारपेट मेरे साथ खड़ी होती थी, बाकी एक्टर होते थे, तो ये होती थी तो लोग मेरे साथ फोटो खिंचाते थे, या बमन जी के साथ या किसी और के साथ। पिक्चर खत्म होते ही हम साइड पे खड़े होते थे, सब इसके साथ फोटो खिंचाते थे। Isn't it the truth? Shubhangi, is that something that actually becomes an achievement for a ranked newcomer, that work speaks for itself? Yes, very much. I think that is one thing that always keeps me going. And when people really have only good things to say about movie, I just come and I thank Anupam sir that, sir, thank you. Like, I think, yes, I've made it. And har roz, I think, 2-3 baar to ye bolte hi, I'm so proud of you. He always reminds me that what you have done is amazing. And he keeps saying thank you, that inke vision ko, just to bring light. And I think that's the biggest achievement. वैन में आके क्या बोलता था सुबह सुबह? Yes, he used to always tell me because he knew that. शूटिंग पे जब हम होते थे, Yeah. तो हमेशा मैं वैनिटी वैन में ही यूज्ड टू कम, एंड जब भी कोई टफ शॉट भी होता था, एंड आई यूज्ड टू गेट नर्वस, एंड मेरे फेस पे दिख जाता था दैट आई एम इन अ वे स्ट्रेसिंग अबाउट समथिंग. ही यूज्ड टू टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिल्म? आई से तन्वी द ग्रेट. हु इज प्लेइंग तन्वी? आई सेड मी. हु आर यू? शुभांगी. दैट्स इट. यू आर, तुमने कर लिया, तुमने साइन कर लिया, यू आर लॉक, मूवी बन रही है, मूवी इज गोइंग टू बी आउट, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन. So that's how also he has always motivated, inspired me to give my best, to do my best. And every time he's just, the way he's just always like, yeah, that's her, that's Shubhangi. Like, I see the pride in his eyes and his vision, and that it's his teachings. And yes, I give full credits to him and for everything that he's done with the movie and with my character. So it's a big achievement. Anupam ji, but somewhere I see the simplicity and something that I've always noticed about you. Of course, at a time when I met you, one never thought के journalists or film Actors, personalities ऐसे Friends बन सकते हैं. लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जिसमें आपका फेथ है, बिलीफ है, आज भी आपने ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले before it said cut, रोल यही तो एक्टर. कोई बात नहीं, मतलब कट करने का टाइम आ गया, वो मेरी पीछे से घड़ी ऐसे कर रही है. अच्छा, जब इनके रोल सामने कुछ नहीं कर सकते. रोल कहा तो आपने ओम नमः शिवाय का, और आपने कुछ अपने जेब में हाथ लगाया, कुछ अपनी रिंग्स पे हाथ लगाया. तो ये मेरे पास शिवलिंग का एक टुकड़ा है, ये मेरे साथ रहता है जिस दिन मेरे इंपॉर्टेंट दिन होते हैं. शिवलिंग बहुत पुराना, हजारों साल पुराना शिवलिंग है नेपाल में, पशुपतिनाथ, वहां के मुझे टेंपल में किसी ने दिया था. तो ये यही है सब कुछ. तो आपने इसको हाथ लगाया, फिर आपने अपनी रिंग्स को हाथ लगाया बिकॉज फोकस के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए. ऑफ कोर्स प्रेयर इज इम्पोर्टेंट. आज बुद्ध पूर्णिमा है, आपको गुरु पूर्णिमा जी. तो नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लिए प्रेयर जो है इज फोकस, इज कॉन्सेंट्रेशन. बिकॉज भगवान के सामने जब हम होते हैं तो हम भगवान को बोलते हैं. पूजा का जो टाइम होता है जरूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टेंटली इज रिलेटेड टू रिलीजियस. ऑफ कोर्स इट्स रिलीजन, यू आर बोर्न इनटू इट, बट इट्स ऑल्सो टू फोकस योरसेल्फ. हमारी फिल्म में एक बड़ा कमाल का भजन है, वो हम रिलीज करने वाले हैं कुछ दिनों में. वो भजन एक ऑटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें वो कहती है उसको कि एक सीन होता है जिसमें वो बोलते हैं कि मेरे को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ भगवान से मांगने आते हैं. कहती नहीं, मैं थैंक यू करने जाती हूँ. आपसे भी कोई पूछता है कि आप कैसे हो. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. हाँ, शुक्राना बहुत शुक्राना, करेक्ट, शुक्राना. तो वही है. पर कुछ लोग फिर कहते हैं कि ये देश बहुत अब रिलीजन के सड़क पर चल चुका है. हमारा देश पहले, नसीरुद्दीन शाह साहब की अभी रिसेंट स्टेटमेंट्स हैं कि पुराना भारत अच्छा था, जहां हम अपने आप को आइडेंटिफाई ऐसे नहीं करते थे कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं. मैं उस इंडिया को मिस करता हूं. I don't completely agree with what he says, because riots तो हिंदू मुस्लिम जो अपने 47 का डिवीजन तो उसी पर हुआ था, धर्म के नाम पर हुआ था. तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तब नहीं हुआ था. बट नसीर साहब मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और फिर उन्होंने वो डिलीट भी कर दिया था शायद वो स्टेटमेंट अपना. बट दैट्स नॉट, दैट्स व्हाई तन्वी इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज शी विल टीच अस दैट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट.
That's where. और अगर दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी एक्टर के साथ फिल्म करता है, उस पे क्या व्यू है? दैट्स हिज पर्सनल चॉइस. अगर करता है तो नहीं करता है. हर एक को अपनी आत्मा को देखना होता है. अपनी आत्मा को मन में रखकर जो चीज उनको सूट करती है वो करते हैं. जो चीज मुझे सूट करती है मुझे करते हैं. मुझे ऐसा नहीं लगता है. आपको नहीं लगता कि पर्सनल नहीं लगता. मुझे लगता है कि हमारे पासपोर्ट पर हमारे नाम के बाद नेशनैलिटी होती है. आवर लॉयल्टी is to our country first. I always believe that what I apply to my home, I'll apply to my country. अगर मेरे घर में आकर कोई मेरी माँ को या मेरी बहन को थप्पड़ मार दे या बदतमीजी करे, और मैं बड़ी नम्रता से कह रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने, एवरीबडी हैज द व्हाटएवर दे वांट टू से, बट फिर मुझे वो अच्छा गाता हो या अच्छा हारमोनियम बजाता हो और मैं कहूँ कि तू ठीक है मेरी बहन को थप्पड़ मार दे, मगर आप गाते बहुत अच्छा है यार, आप आइए ना हमारे यहाँ गाइए ना, मैं वो अपने घर पे नहीं होने दूंगा. तो अगर मैं घर पे नहीं होने दूंगा तो मैं देश पे कैसे होने दे सकता हूँ? पहलगाम के बाद अब आपकी हमारी अब पहली ये तन्वी द ग्रेट से कहाँ चली गई आप? मुझे पहलगाम फिर क्योंकि ये कश्मीर हेडलाइन में- चलेगी नाविका फिर, और मेरे पिक्चर के बारे में कोई नहीं बोलेगा. 4 साल मैंने मेहनत की है, 4 साल मैंने मेहनत की है, 240 लोगों ने, इसका बच्ची का फ्यूचर हमारी पर है, इसके बारे में मैं आपसे अलग से बात करूंगा. आई प्रॉमिस यू. Okay, I completely respect that because मेरे लिए अनुपम खेर is about everything. No, I totally agree with you. It's I would about love to. I have everything never and that shirked is- away from answering any of your questions. That's true. But right That's now, my true. baby is just about to get delivered on 18th of July. I know. And वो अच्छी बात बोलती है कि I'm surrounded by. बोला करो, हमेशा 10 बार बोलता हूँ तुमको बोला करो. No, so I always tell sir that वो जो लेक्चर है आप अपना रिलीज मत करिएगा क्योंकि फिर ये कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा जो आप उसको नहीं, मुझे इसको मैं सिखा रहा हूँ. ये इसके बाद मैं नहीं हूँ इसकी लाइफ में, फिर ये इसको आगे 30-40 साल गुजार रहे हैं. the bird will fly out And of she'll the fly. nest. She's about to fly. no, but he also keeps telling me that the love, warmth, and the pamperings that you've gotten on this set, Yeah. don't expect it outside. Because मुझे सच में बहुत प्यार से, like they actually treated me like this. Like I tell everybody, जो character सबने जो movie में निभाया, वो मेरी personal life में everybody was like that towards me. And I that's thank such a my great stars. feeling. It's a very good पर feeling. इन्होंने अभी क्या डांटा आपको? क्या Oh कहने के yeah, लिए? because वो मैं फिर भूल गई, क्योंकि मैंने मैं- भी डांटा. हाँ. क्योंकि मैं ना एक बहुत अच्छी चीज बोलती हूँ सबको, that I feel like a cub surrounded by lions. So it's like ये सब lion है और I'm a अच्छी बात है. मतलब खुद को लायन बुलवाना मैं तो शेर इसलिए डांट रहे हो मैं ही आप. तो शेर हूँ, मैं ही तो अनुपम खेर हूँ. अरे क्या वाह, बात, क्या बात है. अब नेक्स्ट यू विल बी द डायलॉग राइटर इन सम फिल्म्स. योर सीवी इज जस्ट गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, नहीं नहीं लिखा है. बट अमेजिंग. Before you end, I want to say one thing. How do you know I'm ending? No, how do you know? You're not the I director apologize. of my show. I apologize. I'm very sorry. I'm very sorry. मेरी one of the company's name is Lower Middle Class Corporation. वो देखो लिखा हुआ है लोअर मिडिल क्लास का. वो मेरी कंपनी है जो मेरी अब्रॉड कंपनी है. इट्स बिकॉज वहां से किसी ने पूछा कि आप LLP, मैंने कहा लोअर मिडिल क्लास लिख दो बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज फ्रॉम. नो, आई से दैट द फिल्म इज नॉट मेड ओनली बाय एक्टर्स एंड डायरेक्टर. देयर आर so many I people, know. so many people who are giving, our costume designer, our art director, our makeup people, Trinity, Shipra, ये सब इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया और दिल से काम किया. जब तक उन सब का प्यार, उन सब की दुआएं मिलके एक अच्छी फिल्म बना. It's not only the brilliance of the director or brilliance of the actors. It is all those people who make the film work. And a man who recognizes his team, just as I do mine. Yeah, it is. It's important. अब सौरभ साहब इतने प्यार से बातें करते हैं. सौरभ साहब जब भी फोन करते हैं, सौरभ बोल रहा हूँ, समझ जाता हूँ कि नाविका की तरफ से कुछ मैसेज आया. और शरीफ सर जो हर मेरे शो को डायरेक्ट करते हैं. Correct. हाँ. नरगिस जो हर शो पर मेरे साथ मेकअप के लिए जाती जी हैं जी जी. और फ्लॉज छुपाती उनको हैं. कैसे बोल सकते हैं? मेरा मंगेश, मेरा मेकअप मैन दत्तू को आपने बुलाया. दत्तू ने आपको बिरयानी खिलाई थी न्यूयॉर्क में हाँ. जब आपकी एक और किताब रिलीज हुई Correct. थी. एंड Yes, yeah. हमने मेमोरीज, इंस्पिरेशंस, एंड आपने कहा कि ये फिल्म इंस्पिरेशन देनी चाहिए लोगों को. अनुपम खेर, दिल से आपको कहना चाहती हूँ, you are an inspiration for a whole nation. Agar a small Shimla boy can come here and
अचीव सो मच. कोई भी कुछ भी कर सकता है और कोई भी सपने देखना तो एक बात है, जो सपने देखे हैं उसे अचीव भी कर सकता है. ये आपसे सीखा है, ये तन्वी ने प्रूव किया है और मुझे लगता है मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टुडे कैन ड्रीम बिग. Yes. और ये है हमारा देश. Correct. Agreed. वाह. और Super. आपको मिलकर हमेशा एक थार्सिस होता है. Thank you. और तन्वी जी, मैं एक चीज आपको इनकी बताना उसको जी चाहूंगी. मत बोलो. शुभांगी. शुभांगी. बट सी, आई एम कॉलिंग अ तन्वी. नहीं, जी मत बोलो. Sorry. I want to tell you one thing about him. COVID के time, my sister lost her husband, and she was very low. She was alone in an island in the Caribbean. कोई जा नहीं पाया था. And मैंने एक दिन इनके साथ बात की थी about some interview or something, and I said my sister's going through this. On a con call, he spoke to her and lifted her spirits, which were down in the dumps. And that's the man Anupam Kher is. Thank you. And- अभी क्या शुरुआत में भी रुलाओगे, अभी भी रुलाओगे क्या आप मुझे? नहीं तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि डेप्थ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन probably any success, though I will always wish for your success. Thank you. Unparalleled success. Thank you. फैला दो सबको देखने के लिए दो. Tanvi the Great, a film by Anupam Kher. Anybody who's watching this show, please watch this film because I'm very partial to my friend Anupam Kher. तो उनका काम है, इसीलिए सब जरूर देखिएगा. Thank you. And मैं openly canvas कर रही हूँ How wonderful. because you're a good guy. Thank you so much. Thank you. God bless Thank you very much, Shubhangi. Thank you, Anupam Kher ji. Many more to you. Thank you. 1100 करना है. हाँ 100%. 550 होने वाले हैं. 1100. Even then I will call myself a newcomer. Yeah. Thank you. God bless. Always Thank a you pleasure. so much.